Jai Hind everyone. This is Sheetal Vyas and I welcome you all on my channel Learning with Sheetal Vyas. Friends, today this is the last part of chapter number 1, Food. Where does it come from? Before going ahead, let us revise the previous part. We have seen that a variety of food is available for us. Food means all the nutritious substance which plants and animals take. They get energy to survive and to maintain their life through this food. Now we understood that food is providing us energy for different vital activities, and food is essential to run a successful life. Now we know that we should eat a variety of food or we should take a balanced diet to live a healthy life, because different food items provide us different nutrients and we need different nutrients to perform different vital activities. Then we saw that there are two main sources of food: plant source and animal source. Then we saw that there are different parts of a plant which are edible, but all the parts of any plant are not edible because some of them may be poisonous or some may not be properly digestible in our body. Then we saw that there are some food items which we get from animals. These are milk, meat, eggs, and honey. Then we saw how honey is prepared by honeybee. Now we understood that plants make their own food, and this process is called photosynthesis. All the all the animals, including human beings, depend on plants for their food, whether directly or indirectly. Then we try to divide all the animals in some categories on the basis of their food habits, like herbivorous, which eat only plant and plant products; carnivorous, which eat only flesh of other living animals by killing or hunting them; omnivores, the animal which can eat both plants as well as flesh of animals. Then we saw scavengers. Scavengers also eat flesh of other animals, but generally they do not hunt or kill any live animal. Instead, they like to eat the flesh of animal who either died naturally or been killed by other hunting animals. And today we are going to understand the interrelationship between plants and animals. So let us start today's lecture. You can see, friends, that there is a picture which is showing us interrelationship of different living beings. Here you can see that this is a plant which can be eaten by a deer, because deer is a herbivorous. Then the lion will eat this deer because lion is carnivorous. Then when this lion will die, then goes it will go to the soil, and scavengers and other bacteria
will destroy its body, and all the basic nutrients, all the basic component of the body will be mixed in the soil. This soil will be utilized by the plants again. So here what we can see, that there is a food chain, or we can say a food cycle. Plants, then herbivorous, then carnivores, scavenger, and again the plants. So the main thing is, there is a well knit interrelationship between plants and animals, and even among different animals. This feeding relationship is called food chain. Food chain starts with green plants and proceeds with consumers. Again, let us check. As this food chain starts with plants and it is proceeding to the consumers. So, this is the food chain which is showing dependency on plants. I hope now you understood that all the animals are depending on the plants directly or indirectly. We can say that if this deer will not be there, then this lion will not survive. So, indirectly, this lion depends on the plant. If plant would not be there, then what deer will eat? If deer will not eat anything, it will not exist. If it will not exist, then what lion will eat? So the lion will also not exist. But the thing is that lion eats the deer, deer eats the plant. So indirectly, lion is depending on the plant. I hope now you understood. Now let us move. Food and human population. We know that there are so many people in the world who do not get sufficient food daily. आप सभी जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें पूरा खाना नहीं मिलता, जिन्हें जितना उनकी ज़रूरत होती है उतना खाना भी रोज़ नहीं मिलता. So we should not waste the food at all. We should keep some points in our mind to save food. This is very simple point which we should understand कि हमें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए और हमें फूड को सेव करना चाहिए. तो कैसे हम फूड को सेव कर सकते हैं? लेट अस सी. बाय एज पर योर रिक्वायरमेंट, नॉट मोर देन दैट. हमें उतना ही फूड खरीदना चाहिए जितने की हमें रिक्वायरमेंट है. Avoid storage of food in large amount. Sometimes we have to store some food items, some food articles. पर हमको बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत लार्ज अमाउंट में फूड को स्टोरेज नहीं करना चाहिए. Eat when you are really hungry. Do not overeat. हमें खाना कब खाना चाहिए? जब हमें सच में भूख लगी हो. हमें ओवर ईट नहीं करना चाहिए. बिना ज़रूरत के खाना नहीं खाना चाहिए. Do not take a lot of food in your plate if you are not able to finish it. हमें जब भी हम खाना खाएं तब हमारी डिश में या हमारी प्लेट में हमें उतना ही खाना लेना चाहिए जितना हम खा सकें. अगर हम एक्स्ट्रा खाना लेंगे और उसे फिनिश नहीं कर पाएंगे, then definitely we have to throw it. And this is not good at all to waste the food. Eat fresh and healthy food every time. You should not eat stale food. हमें हमेशा फ्रेश और हेल्दी फूड खाना चाहिए. स्टेल या बासी खाना नहीं खाना चाहिए या अनहेल्दी फूड नहीं खाना चाहिए.
ईट बैलेंस डाइट, और हमें हमेशा बैलेंस डाइट लेनी चाहिए ताकि हमारी बॉडी की सभी न्यूट्रिएंट्स उसे मिले और उनकी रिक्वायरमेंट को हम कंप्लीट कर सकें. Food and human population is really interrelated. As we have seen how to save the food, but to fulfill the need of growing population, we need to take some more steps. हालांकि हमें खाना बचाना चाहिए, we should save the food, but सिर्फ थोड़ा थोड़ा फूड बचाकर हम ये जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसकी सभी रिक्वायरमेंट को, सभी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते. उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा स्टेप उठाने होंगे, एंड दीज आर एज फॉलोज. वी शुड ट्राई टू ग्रो मोर एंड मोर फूड क्रॉप्स टू सर्व द नीड ऑफ पीपल. हमें लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करनी चाहिए. कौन सी क्रॉप्स? फूड क्रॉप्स हमको ग्रो करनी चाहिए. वी शुड ट्राई टू फाइंड न्यू वेज टू इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन. यू नो, राइट नाउ द टाइम ऑफ टेक्नोलॉजी इज देयर. अभी सभी जगह पर न्यू टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं. देन वाई शुड वी नॉट ट्राई फॉर द एग्रीकल्चर, या हम जो फूड क्रॉप ग्रो करते हैं उसमें भी अगर हम नई टेक्निक्स या नए वेज, नए रास्ते ढूंढकर अगर हम कोशिश करें तो हम अपना फूड प्रोडक्शन और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं. वी शुड ग्रो मोर फूड क्रॉप्स विद द यूज़ ऑफ न्यू टेक्निक्स. द सेम थिंग दैट हमें नई टेक्निक का यूज़ करके और ज़्यादा फूड क्रॉप्स को ग्रो करना चाहिए. We should improve our storage houses to store the extra food crops for the future use. हमारी कंट्री में या किसी भी कंट्री में जो फूड ग्रो किया जाता है उसे हमेशा स्टोरेज हाउस में स्टोर करके रखा जाता है ताकि उसे फ्यूचर के लिए यूज़ किया जा सके. बट स्टोरेज हाउसेस की क्वालिटी को भी हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ताकि हम लंबे समय के लिए फूड को स्टोर करके प्रॉपरली रख सकें. सो हियर इट इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर. नाउ दिस इज़ द टाइम टू रिमेंबर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. फर्स्ट वन, फूड इज़ द न्यूट्रिशियस सब्सटेंस ईटन बाय द लिविंग बींग्स. फ्रेंड्स, अगर आप इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको ये चैप्टर मोस्टली समझ में आ जाएगा. सो लेट अस रिवाइज दैट फूड इज न्यूट्रिशियस सब्सटेंस ईटन बाय द लिविंग बींग्स. फूड क्या है? वो न्यूट्रिशियस सब्सटेंस जिसे लिविंग बींग्स खाते हैं. टू लिव अ सक्सेसफुल एंड हेल्दी लाइफ वी नीड टू टेक अ वैरायटी ऑफ फूड इन आवर डेली मील्स. अगर हम एक सक्सेसफुल और हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो हमें अपनी डेली लाइफ में फूड वैरायटी को इंक्लूड करना होगा. डिफरेंट फूड आइटम्स गिव अस डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स एंड डिफरेंट फूड आइटम्स आर मेड ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स. अलग अलग फूड आइटम अलग अलग इंग्रेडिएंट्स से बने होते हैं और ये हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स देते हैं टू गेट द एनर्जी to perform different vital activities. We get food from two sources, plants and animals. हमें खाना जो है, फूड जो है वो प्लांट और एनिमल से मिलता है. We can use different parts of a plant as our food, but all the parts of a plant are not necessarily eatable. हम क्या कर सकते हैं? किसी भी प्लांट के एक से ज़्यादा पार्ट को एज अ फूड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किसी भी प्लांट के सभी के सभी पार्ट्स जो होते हैं वो खाने लायक या ईटेबल नहीं होते. कुछ पॉइजनस हो सकते हैं और कुछ शायद डाइजेस्टिबल ही नहीं होते हैं. नेक्स्ट, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड एंड ऑल द अदर लिविंग बींग्स डिपेंड ऑन दिस फूड वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. प्लांट अपना भोजन, अपना फूड खुद बनाते हैं
और जो दूसरे लिविंग बींग्स हैं वो उसी फूड पर डिपेंड करते हैं, चाहे डायरेक्टली या चाहे इनडायरेक्टली, जैसा कि अभी हमने फूड चेन के एग्जाम्पल में देखा था। नेक्स्ट वन, वी कैन categorize different animals according to their food habits, like herbivores, carnivores, omnivores and scavengers. हम एनिमल्स को उनकी फूड हैबिट के बेसिस पे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। हर्बीवोरस जो प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोरस जो सिर्फ लिविंग एनिमल्स को किल करके या उनका हंट करके खाते हैं, ओमनिवोरस जो प्लांट्स एज वेल एज फ्लैश दोनों खा सकते हैं, एंड स्कैवेंजर्स जो डेड एनिमल्स की बॉडी को ही खाते हैं बट ये डेड एनिमल को खाते हैं, लिविंग एनिमल को हंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट, there is a well-knit chain of the interrelationship among all the living beings. It is called food chain. सभी जितने भी एनवायरनमेंट में, जितने भी अर्थ पे जितने भी लिविंग बींग्स हैं, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनके आपस में इंटर रिलेशनशिप है जिसको हम कहते हैं फूड चेन। फूड इज अवर बेसिक नीड and everyone on the earth must get it in sufficient and required amount. फूड जो है वो हमारी बेसिक नीड है और इस अर्थ पे रहने वाले हर एक लिविंग बीइंग को सफिशिएंट अमाउंट में और रिक्वायर्ड अमाउंट में फूड मिलना बहुत ज़रूरी है। We must not waste the food and try to grow more edible crops to fulfill the need of the food of the ever growing population. हम सभी को फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम और ज़्यादा एडिबल क्रॉप्स या फूड क्रॉप्स को ग्रो कर सकें ताकि जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। सो फ्रेंड्स, here our chapter is finished. We learn so many things in this chapter. In our next lecture, we will try to find out some more new and exciting things with new chapter. Till then, Jai Hind everyone.